Hello students, class 11th chemistry. Today we are studying the topics dual nature of the light, electromagnetic radiations, photoelectric effect and black body radiations. So last वीडियो में जो हम 3 मॉडल्स स्टडी किए थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर्स मॉडल, तो कुछ टर्म्स वहाँ पर थी जिनको हम पूरी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. So these points will be discussed in detail in this video. First of all, dual nature of the light or electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations है dual character, double character. दो तरह का character रखते हैं. It can behave as particle as well as wave. दोनों characters के हैं. Some of the properties are explained on the basis of particle nature, like photoelectric effect and black body radiation, and some properties are explained only if it is considered as wave-like character. These are dispersion, diffraction, reflection and interference. So these all points will be discussed now in detail. First, photoelectric effect. Photoelectric effect is the ejection of electrons from the surface of certain metals when these are exposed to a beam of light. It is known as photoelectric effect. किसी मेटल की सरफेस पर जब पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट पड़ती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, इजेक्ट होते हैं. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटोइलेक्ट्रॉन्स. It was first observed by H. Hertz in 1887. So as the diagram is indicating, some photons are striking on the metal surface and negatively charged electrons are ejected out from the metal. So that is carried out in the closed container, closed tube where light enters and from metal surface electrons are ejected. That is the photoelectric effect. The experiment based on the photoelectric effect was light of a particular frequency were striken on a clean metal surface inside the vacuum chamber and electrons are ejected from the metal surface. These are counted by detectors and that measures their kinetic energy. और वो उनकी कितनी kinetic energy के साथ वो निकलते हैं बाहर, ये भी डिटेक्ट करता है. Important observation related to photoelectric effect. कौन कौन से इसकी मेन पॉइंट्स हैं जो हमें समझने चाहिए, which we must understand. Number 1, only light of certain frequency can eject out electrons. पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट ही केवल इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकती है. दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट्स एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड if the energy of light is lesser than threshold energy, no matter what is intensity of light. Intensity of light का कोई इफेक्ट नहीं होगा if the beam of light is not having light energy equal to threshold, so no electron will be ejected. If light has energy more than threshold, लेकिन अगर beam of light की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी that will be associated with the ejected electrons as kinetic energy. उनके साथ kinetic energy बन जाएगी, उतनी ही तेजी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और उनकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी. The kinetic energy of these electrons increases with the increase in frequency. As we know, if threshold frequency is nu naught and frequency of light is nu, the kinetic energy will be Ke. Kinetic energy will be half mv square is equal to h nu minus h nu naught. So that is nu minus nu naught multiplied by h. So we can find out the kinetic energy of the ejected electrons if we know the frequency of the beam and threshold frequency. If the energy of light is threshold, if sufficient amount of energy is there, that is threshold. So if intensity of light increases, strength of the light increases, number of ejected electron will increase. ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई जाती है तो इंक्रीज की जाती है. That is only if
द एनर्जी ऑफ लाइट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये कंपल्सरी टर्म है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। Explanation of the photoelectric effect. How can we explain it? So it was explained by Einstein in 1905. The using Planck's quantum theory. He used Planck's quantum theory, and for that he got Nobel Prize in physics in 1921. As per the explanation, electrons in the metal are attracted by the nucleus, so require energy to split these attractions. तो कोई एनर्जी की अगर एनर्जी मिल जाती है तो ये अट्रैक्शन टूट जाएगा and electrons are ejected. So if the beam of light is having sufficient energy to split these attractions, electrons are ejected. तभी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं अगर सफिशिएंट एनर्जी की लाइट ही मेटल सरफेस पे पड़ेगी. These sufficient energy is threshold energy. Then photon with threshold energy strike the metal surface. These transfer their energy to electron and electrons are ejected. ये पॉसिबल तभी है कि जब जो photons हैं these transfer their energy to electrons. And photoelectric effect explain the particle nature because a particle can transfer the energy to other particle. Wave cannot transfer their energy to other particles. So the light is having particle nature, or light is composed of radiations are composed of particles. Now black body radiation, what is that? We'll discuss in detail. A perfect black body is that. Black body means black color, iron, black color, coal, etc. which absorb radiation of all frequency. जो सारी frequency की energies को, light को absorb कर लेता है, और जब इसको हम हीट करते हैं तो it evolves out all the radiation, सभी को बाहर भी निकाल देता है. So actually no such body exists. कोई भी ideal body नहीं है, but we can consider the ideal body as a perfect body. So जब when black body is heated, it emits radiation. ये radiations निकालती हैं. The color of which changes from red to yellow, then to white, and then it becomes blue as the temperature becomes very high. So this emission of radiations of different colors by the black body is known as black body radiation, as indicating the different colors are having different frequency. As the temperature increases from 1000 to 8000, the color is changing from red to blue. It can be explained as when black body is heated, the radiations are emitted, and with the increase in temperature, the color of radiation changes from red to blue. That is, frequency of light is increasing, that is, energy of light is increasing, and that is only possible when energy is depending on the frequency, and that is as per the particle nature. Particle nature के बेस पर ही फ्रीक्वेंसी पर लाइट एनर्जी डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी के साथ ही कलर चेंज होता है, ना कि इंटेंसिटी के साथ. सो इफ द radiations are having only wave nature, the color change must not be there when black body is heated. कोई कलर चेंज नहीं होना चाहिए था अगर केवल वेव नेचर है. सो इट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशंस. इट कैन बी एक्सप्लेन एज, तो ब्लैक बॉडी का जो वाइडली यूज्ड मॉडल है ब्लैक बॉडी का, इट इज यूज्ड एज हैविंग स्मॉल होल इन द कैविटी with walls which are opaque or to radiations. इनमें से radiations pass हो सकती हैं. Radiations incident on the hole will pass into the cavity. इसके अंदर चली जाएंगी और वो उसके अंदर ही घूमती रहेंगी. The hole is not quite a perfect black surface. उसके अंदर जो खाली जगह है वहां पर कोई complete hole पे जो है कोई black body नहीं है, that is transparent. तो if wavelength of the incident radiation is greater than the diameter of the hole, अगर ये जो hole बना हुआ है इसके डायमीटर से ज्यादा है रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन जो लाइट पड़ती है, सो पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड, वही हमें कलर चेंज दिखाई देता है. प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स. व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स? वी हैव डिस्कस्ड दैट द वेव नेचर explains the diffraction, reflection, etc. So these will be discussed one by one. Diffraction.
Diffraction is the spreading of the light when it passes through or by an opening or through the edge. So opening must be very narrow. जिस स्लिट हम यूज कर सकते हैं उसके लिए बहुत ही कम जगह से लाइट को निकालते हैं, तो जब वो लाइट उसमें से निकल के आती है तो एक पैटर्न प्रोड्यूस करती है, एक सर्कल टाइप का पैटर्न प्रोड्यूस करती है प्लेट पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर, और यही कहलाता है डिस्पर्शन, दैट इज नोन एज द डिफ्रैक्शन। जैसे हम किसी पानी के अंदर एक स्टोन डालते हैं, कंकड़ डालते हैं, so there are some circle is formed around that point, so that is diffraction of the waves. In the same way, sound as well as light waves have the diffraction pattern. So it is a phenomena that occurs when a wave encounters an obstacle or opening. जब कोई वेव किसी ओपनिंग से या किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो लाइट रास्ता बदलती है और बैंड फैलती है, दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। Interference. Interference means when two waves travel in the same plane. These may interfere with each other. In the sense, these sometimes strengthen and in second time these weaken each other. It is interference. जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ जाएगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा दोनों वेव्स का, तो वो क्रेस्ट की हाइट बढ़ जाएगी और वेव की जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ ट्रफ इंक्रीज हो जाएगी. बट व्हेन दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, so these will cancel each other, these will cancel their effect and these will weaken the effect of each other, so that is known as the interference. जैसे आप देख रहे हैं इसमें वेव में जब दोनों वेव एक ही डायरेक्शन चलती हैं, सो जो न्यू वेव बनेगी जो कि दो स्ट्रॉन्ग लाइन से दी गई है, जो कि पॉइंटेड लाइन से नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन से दी गई है, दैट इज इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू. रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन मीन्स जब कभी हम पेंसिल या पेन पानी के अंदर रखते हैं तो ट्रांसपेरेंट ग्लास में देखते हैं तो हमें पेंसिल अंदर से झुकी हुई दिखाई देती है. दैट इज बिकॉज ऑफ bending of the light when it passes from one medium to other medium, one transparent medium to other transparent medium, from air to water. Both are the medium through which light can pass. So mediums are changing, so path of light or light can be bend. तो वो bend हो जाती है and that is known as refraction. Dispersion. Dispersion means like sunlight is composed of 7 colors. So when it is passed through the prism, it splits into 7 colors in the order of Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. This process is known as the dispersion, splitting of light in its component colors. Components is known as dispersion. And rainbow is their arrangement is known as spectrum, and rainbow is the natural spectrum. So these are the properties of waves like character which can be explained when radiation is considered as the wave. So that is all for today. Keep watching, like, share and subscribe the channel so that I can provide you best from my side. Thank you.